Chairman, sir, I rise to apprise this August House of recent developments in West Asia that are a cause of deep concern to all of us. As honourable members are aware, this round of conflict started on 28th February 2026. It has witnessed not only fighting between Israel and the United States on one side and Iran on the other, but also attacks on a number of Gulf states. There have been numerous casualties, including at the leadership level in Iran, as well as destruction of infrastructure in the region. At the very outset, government had issued a statement on 28th February expressing its deep concern and urging all sides to exercise restraint, avoid escalation, and prioritize the safety of civilians. We believe, and we continue to believe, that dialogue and diplomacy should be pursued to de-escalate tensions and address underlying issues. It is also imperative that the sovereignty and territorial integrity of all states in the region be respected. Chairman, sir, given the gravity of the situation, the Cabinet Committee on Security (CCS) met on 1 March under the chairmanship of the Honorable Prime Minister. It was briefed on the airstrikes in Iran and the subsequent attacks in several Gulf countries. The CCS was concerned over the safety and security of the Indian community in the region. It also focused on the implications for regional security and for economic and commercial activities. The committee was apprised of difficulties faced by Indian travelers transiting the region and by students appearing for scheduled examinations in this country. It directed all concerned ministries and departments to take appropriate measures to respond to these problems. Honorable Prime Minister continues to closely monitor emerging developments, and relevant ministries are coordinating to ensure effective responses. Chairman, sir, the conflict has continued to intensify and the security situation in the region has deteriorated significantly. We have noted that, in fact, the conflict has spread to other nations with mounting destruction and deaths. Normal life and economic activities in the entire region are visibly affected and in some cases have come to a halt. We therefore reiterated our call on 3 March for dialogue and diplomacy and spoke up for an early end to the conflict. I'm confident, sir, that the entire House joins me in expressing our sorrow at the loss of life. Honorable Chairman, sir, while any development that negatively impacts peace and security in the world is deeply troubling, this ongoing conflict is an issue of particular concern for India. We are a neighboring region and understandably have obvious stakes in West Asia remaining stable and peaceful. There are almost 1 crore Indian citizens who live and work in the Gulf nations. In Iran too, there are a few thousand Indians who are there for study and employment. The region is key to our energy security and includes many important suppliers of oil and gas. Chairman, sir, the Gulf is also a major trade partner, accounting for US dollars. आप लोगों से आग्रह है कि जो सवाल आप उठा रहे हैं उसी सवाल का जवाब सरकार की तरफ से विदेश मंत्री जी दे रहे हैं। अगर आपकी चिंता है कि भारत के लोग गल्फ में हैं, भारत के लोग ईरान में हैं, मिडिल ईस्ट में हैं, तो क्या कार्रवाई सरकार कर रही, आप क्या परिचय दे रहे हैं? अगर सरकार की तरफ से आपकी उस चिंता का स्टेटमेंट आ रहा है, आपके इशूज पे स्टेटमेंट आ रहा है, तो मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग सदन को कृपया सुचारू रूप से चलने दें। आप सुनिए माननीय विदेश मंत्री जी, जो आप
सवाल को उठाना चाहते हैं, उसका जवाब दे रहे, स्टेटमेंट दे रहे हैं। आप सुनना नहीं चाहते, पहले से प्ले कार्ड लेके आए हैं। ये प्ले कार्ड लेके क्यों आए? कई बार अध्यक्ष जी ने कहा प्ले कार्ड लेकर के सदन में नहीं आया जा सकता, फिर भी आप तैयारी के साथ इस सदन को नहीं चलने देना। माननीय विदेश मंत्री। Chairman sir, the Gulf is also a major trade partner, accounting for US dollars 200 billion almost annually of trade. The House is also aware that in the last decade, there have been significant investments from the region into the Indian economy. Therefore, the serious supply chain disruptions and climate of instability that we perceive are indeed serious issues. Furthermore, these include attacks on merchant shipping, where Indian nationals often constitute a large proportion of the crews. We have sadly already lost 2 Indian mariners and 1 remains missing in such incidents. I know, sir, that the House joins me in condoling that. Honorable Chairman, sir, government has been assessing the situation in West Asia continuously since the 12-day war in June 2025. We noted the indications of growing tension and cautioned the Indian community in Iran accordingly. On 5 January, Indian nationals were advised by the Ministry of External Affairs to avoid non-essential travel to Iran. Those already resident there were urged to register with the embassy, exercise due caution, and monitor embassy website and social media handles. A second advisory was issued on 14 January, reiterating the advice to avoid travel in even stronger. The Directorate General of Shipping Mumbai, in parallel, issued its own advisory on 13 January for Indian seafarers, asking them to follow embassy advisories and avoid unnecessary movement of ships. Recruitment and shipping companies were asked not to deploy or send Indian seafarers to Iran. Chairman, sir, reflecting our assessment of the evolving situation, the Indian Embassy in Tehran issued an advisory on 14 February urging Indian nationals, including students, pilgrims, business persons and tourists, to leave Iran by all available means of transport, including commercial flights. They were asked to contact the embassy for any assistance and provided with 24/7 help. This was again reiterated in very strong terms through another advisory on 23 February. Some heeded these advisories and have left the country. However, many others have disregarded them and remain in Iran. We are also in touch with fishermen who operate out of Iran. This, sir, was the situation till 28 February 2026. Honorable Chairman, sir, once the conflict commenced, the Indian Embassy has facilitated the relocation of several Indian students in Tehran to places outside Tehran. An advisory update with emergency contact helplines was issued on 3 March. Similarly, facilitation was extended to pilgrims who were there in Iran for their internal movement. Indian nationals who were in Iran for business purposes were assisted to cross over to Armenia and to return home. The embassy in Tehran remains fully operational, I should say, in fact, on the highest order. They are totally committed to supporting the Indian community in this difficult situation and in assisting Indian nationals who may wish to cross international borders. Where seafarers are concerned, the Directorate General of Shipping, through an order on 2nd March, constituted a quick response team for immediate response, coordination and support functions. This will function on a 24/7 basis. Honorable Chairman, sir, I would like to inform you that every Indian embassy in the region has similarly issued advisories. This is so with Israel, UAE, Bahrain, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia, Iraq. Many of them did so on the 28th of February. Israel did it again on the 1st of March. Many of them again in the Gulf did it on the 5th of March.
Saudi Arabia did it on the 8th of March. So this has been a continuous exercise. The MEA has set up a dedicated special control room to monitor the situation and respond to queries from those affected as well as their families. Our last update was issued on the 7th of March. Chairman Sir, I would like to inform the House through you that our diplomats are working hard to assist standard transit passengers in hubs like Dubai, Doha, and Abu Dhabi. They have facilitated international border crossings for Indian nationals, including from UAE to Oman and from Qatar, Kuwait, and Bahrain to Saudi Arabia. Wherever there has been a partial opening of airspace, we have approved and undertaken commercial flights, including non-scheduled flights, for the return of Indian passengers. Our estimate is that about 67,000 of our nationals have done so as a result. So, the Ministry of Civil Aviation has also put out figures for the last 3 days. On the 7th of March, there were a total of 51 inbound flights operated by Indian carriers, 49 on the 8th of March, and there are 50 flights planned for the 9th of March. Chairman, sir, throughout this period, government has maintained close contact with relevant countries. Honorable Prime Minister has personally spoken to the President of UAE, the Amir of Qatar, the Crown Prince of Saudi Arabia, the Crown Prince of Kuwait, the King of Bahrain, the Sultan of Oman, the King of Jordan, and the Prime Minister of Israel. In each case, we received assurances that the well-being of the Indian community will be the priority for the host government. I have similarly been in close touch with my counterparts in these countries. Insofar as the United States is concerned, we have maintained regular contacts through diplomatic channels. While attempts have been made, contacts with Iran at the leadership level are obviously difficult at this time. I have, however, spoken to Foreign Minister Arakchi on 28th of February and the 5th of March. We will continue this high-level conversations in the coming days. So, the House will also be interested in the issue of an Iranian vessel that is currently docked in Kochi. The Iranian side had requested permission on 28th February for 3 ships in the region to dock at our ports. This was accorded on 1st of March. IRIS Lavan actually docked on 4th March in Kochi. The crew is currently in Indian naval facilities. We believe that this was the right thing to do, and the Iranian foreign minister has expressed his country's thanks for this human gesture. So, in view of the implications of this conflict for our energy security, I also seek to address that particular concern. Government remains committed to ensuring that fully taking into account availability, costs, and risks of the energy markets. For us, sir, the interest of the Indian consumer has and will always be the overriding priority. Where required, Indian diplomacy has supported the endeavors of our energy enterprises in this volatile situation. Honorable Chairman, sir, let me conclude by highlighting the 3 guiding factors of our approach. 1, India is in favor of peace and urges a return to dialogue and diplomacy. We advocate de-escalation, restraint, and ensuring the safety of civilians. 2, the well-being and security of the Indian community in the region is our overriding priority. We will continue to work with governments of the region towards that end. And 3, our national interest, including energy security and trade flows, will always be paramount. I'm confident, sir, that the government has the full support of this august House on this matter. I thank you. Thank you very much. I would request to my all member of parliament. So now you are raising some concern through your play cards. You are raising issue of energy security,
यू आर रेजिंग इशू ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी। तो मेरा कहना कि अगर आप एनर्जी सिक्योरिटी की बात आपने उठाई है तो माननीय अभी विदेश मंत्री जी ने एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में सदन के माध्यम से सरकार की तरफ से आश्वस्त किया है। जहां तक भारतीय लोग हैं जो आप कह रहे हैं, इस प्ले कार्ड को दिखा रहे हैं, नीचे रखिए कि जो लोग विदेश में हैं, गल्फ में हैं, मिडिल ईस्ट में, उनको किस तरह से लाया जा रहा है, पूरा डिटेल स्टेटमेंट दिया है। या तो केसी वेणुगोपाल जी, यू हैव नॉट हर्ड व्हाट ही हैज सेड ऑलरेडी foreign minister has issued statements about your all subjects. Even you are not satisfied, if you may not be satisfied, you can raise this issue in business advisory committee for more discussion, for more debate. अगर आप इस विषय पे जो उठाना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई ऐसे नहीं चलती। माननीय विदेश मंत्री जी ने कुछ विषय उठाया है। माननीय विदेश मंत्री जी ने अगर सारी बातों का जवाब दिया, आपको कुछ इसमें आगे है तो आप बिजनेस एडवाइजरी कमेटी पे इस पर चर्चा के लिए मांग कर सकते हैं, लेकिन आप सदन को बाधित कर रहे हैं। यू आर नॉट अलाउइंग दैट। माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर। चेयरमैन सर, सभापति महोदय, मुझे लगता है कि विपक्ष पार्टी खुद कंफ्यूजन में है। विपक्ष के लोगों को पता ही नहीं कि वो क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले तो वो स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का एक नोटिस देता है और वो नोटिस पेंडिंग है। उस समय वो दूसरा नोटिस देते हैं, फिर एडजॉर्नमेंट का। एक बेसिक डेकोरम होता है, संविधान का, इस सदन का रूल होते हैं। इन लोगों को कोई लेना देना नहीं इससे। जब स्पीकर के खिलाफ मोशन दिया, आप लोग ने नो कॉन्फिडेंस का रेजोल्यूशन दिया, और जब हम लोग तैयार हैं चर्चा करने के लिए, दूसरा मोशन लेके आने का क्या मतलब है? और जो आप बिना मतलब जो आवाज यहाँ उठा रहे, विदेश मंत्री ने इतना सुंदर से, व्यापक रूप से, अच्छी तरह से जो वक्तव्य दिया है, आप लोग सुनते नहीं है, आप लोग को सुनना नहीं है। आई हैव नेवर सीन such irresponsible opposition party in my lifetime. This opposition party does not understand the basic ethics of this house, the rules of this house. They don't understand the values of the constitution. ये क्या चाहते हैं आप लोग? क्या एक परिवार, एक आदमी पूरा देश का महाराजा है क्या? इस देश में संविधान है, इस सदन में रूल है। आप लोग अपना ही दिया वाला रूल को नहीं मानते। मैं कांग्रेस के जो थोड़ा सीनियर है, जो सीनियर इस हाउस में रहे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, थोड़ा अंतरात्मा में जाग के देखिए। आप जो ये हरकत कर रहे हैं, ये इससे क्या भला हो रहा है देश का, और संसद का गरिमा को आप लोगों ने कितना गिराया है। अध्यक्ष महोदय, मैं खंडन करना चाहता हूँ और फिर से आंदोलन करता हूँ। जो प्रस्ताव आप लोगों ने लाया है, अनावश्यक जो प्रस्ताव लाया है, उस पे चर्चा करने के लिए हम लोग पूरा तैयार है। आप हिम्मत है तो अभी शुरू करो, हम लोग चर्चा के लिए तैयार है। माननीय सदस्यगण, जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि आज का जो मोशन आया है वो आपके द्वारा आया है, और उसको खुद स्पीकर साहब ने स्वीकार किया और आज के एजेंडे पे है, और सरकार उस पर चर्चा करने के लिए तैयार है। और आप नहीं, आखिर आपने इस बात को नहीं महसूस किया कि जो आज का एजेंडा है, आज का जो एजेंडा मिस्टर केसी वेणुगोपाल, हु है who has given a notice? You have given a notice. I'm not going to judge your unmerit कि किस तरह। इसका मतलब आप सीरियस नहीं हैं। एक तरफ स्पीकर साहब ने आपकी नोटिस को स्वीकार कर लिया, और ये कभी परंपरा नहीं हुई है, पहली बार हो रहा है कि जिस दिन से आपने नोटिस दिया है, उन्होंने सदन की कार्रवाई में कहा कि मैं चेयर नहीं करूंगा। उन्होंने हाई मॉरल ग्राउंड पे जब तक इसका डिसीजन न हो जाए, जब तक इस पर डिस्कशन न हो जाए, तब तक वो चेयर नहीं कर रहे हैं, और आप उसको चर्चा करने के लिए तैयार नहीं। ये नहीं चलेगा। ये कैसे होगा कि एक तरफ स्पीकर का इतना हाई मॉरल ग्राउंड हो? क्या नो, ये आप
Even it is your irresponsible behavior. मिस्टर केसी वेणुगोपाल, आज आपका मोशन है। अभी पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा है। मैं कहना चाहता हूं कि आज जिस एजेंडे पे मैं आपको अलाउ कर रहा हूं, एक तरफ आप कहते हैं बोलने नहीं दिया जा रहा है, एक तरफ आप कहते हैं बोलने नहीं दिया, मैं आपको बोलने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। या तो आप कहिए कि हमको नहीं बोलना है, या तो आपको, जब आज आपका मोशन है, आपको सदन में मैं आपको अलाउ करना चाहता हूं। नहीं, आप बैठ जाइए, आप सब लोग बैठ जाइए, आपका विषय है। मैं खुद अलाउ करने के लिए, तो आप खुद बोलना भी नहीं चाहते। सदन को जिस समय चाहेंगे जिस तरह से चलाएंगे। आपको चेयर अलाउ कर रहा है, चेयर आपको अलाउ कर रहा है। एक तरफ आपने, ये कोई सरकार के खिलाफ मोशन नहीं है, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है। आपने अपने हाउस के कस्टोडियन के खिलाफ, जिसके लिए इसके पहले मैं केसी वेणुगोपाल जी आपको कह देना चाहता हूँ, खुद आपके प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये कोई विषय जो है, ये विषय ऐसा है कि इसमें इस सभा की महान परंपरा रही है कि हम अध्यक्ष की सदा सहता पे उंगली नहीं उठा सकते, चाहे हम अध्यक्ष से सहमत हो या न सहमत हो। अध्यक्ष को उस कठिन स्थिति में काम करना पड़ता है और पक्षपात की भावना की विकट हो जाती है अध्यक्ष को उन सब से। लेकिन इसके बावजूद भी अध्यक्ष पे अगर उनकी सदा सहता पे उठाते हैं, तो ये आप लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। ये खुद उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा। इसके बावजूद भी आप ये प्रस्ताव लेकर के आए हैं, तो इस प्रस्ताव पे मैं चर्चा करने की अनुमति दे रहा हूं। आप कृपया अपने जगह पे बैठे, आप कृपया बैठिए। क्या अपना जो आपका संकल्प है, जो आपका अपना संकल्प है, प्रस्ताव है, उसको नहीं उठाना चाहते हैं? नहीं उठाना चाहते हैं? जो आज का एजेंडा है उस पर आप नहीं बोलना चाहते? आखिर पूरे देश में ये एजेंडा आज पे है, आज का एजेंडा आपका है। इस एजेंडे पे आप अपने रिजोल्यूशन पे, जिसको आज नियमों के अनुसार स्वीकार किया गया, चेयर आपको अनुमति दे रही। आखिर मिस्टर केसी वेणुगोपाल जी, आप अपने लोगों को कहिए कि चेयर आपको अनुमति देने जा रही है। मैं पूरे जितना विस्तार से आप बोलना चाहेंगे आप बोलेंगे, लेकिन ये नहीं है कि आप एक तरफ ऑनरेबल स्पीकर के खिलाफ आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर के आए। आज वो एजेंडे पे है और अभी पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, और इसके बावजूद भी आप लोग इस सदन में दूसरा विषय लेकर के आ गए। अगर आप नहीं चाहते हैं अपना संकल्प उठाना, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, मैं आप सब लोगों से मैं लगातार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? अगर मैं सदन की कार्रवाई को चलाना चाहता हूँ, और देश भी चाहता है कि अगर विपक्ष ने एक रिजोल्यूशन में आपने अपने स्पीकर के खिलाफ अगर कोई टेक्स्ट दिया है, अगर आप उनके खिलाफ अविश्वास लाना चाहते हैं, तो आप इस पे चर्चा करिए। नहीं, आप अंदर जाइए, मैं चाहता हूं आप लोग बुलवाना, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप चाहते हैं इस पे, तो मैं सदन की कार्रवाई को 3 बजे तक के लिए स्थगित कर रहा हूं।